Hi students, here I am back with another video on differentiation. Now differentiation is a very important topic of calculus. Actually your calculus starts from differentiation. After differentiation you will have application of derivatives, you will have integration, AOI, differential equation. So there is lot to calculus. Calculus almost covers 40% of your marks. 40 marks are given to full calculus. So 5, 6, 7, 8, 9. These 5 chapters have a weightage of 40 marks. So please do pay attention. What is differentiation? We would be taking up inverse trigonometric functions ka differentiation. Differentiation of inverse trigonometric functions. Like you just now studied differentiation of sin x. That was what d by dx of sin x was. What cos x. You studied d by dx of tan x, that was sec square x. So now we would be studying d by dx of sin inverse of x, d by dx of tan inverse of x. So d by dx of sin inverse of x is what? 1 upon root of 1 minus x square. Same ways d by dx of cos inverse of x is what? Minus 1 upon root of 1 minus x square. D by dx of tan inverse of x is 1 upon 1 plus x square. D by dx of cot inverse of x is minus 1 upon 1 plus x square. So they are very easy to remember. You will have to remember them as formula. So how are they easy? Sin inverse में क्या आ रहा है? 1 upon root of 1 minus x square आ रहा है. और cos inverse में क्या आ रहा है? Minus 1 upon root of 1 minus x square. ऐसे ही tan इनवर्स में क्या आ रहा है? 1 upon 1 plus x square. cot इनवर्स में क्या आ रहा है? minus 1 upon 1 plus x square. sec इनवर्स x का क्या है फॉर्मूला? d by dx of sec इनवर्स of x is how much? Nothing but it is nothing but 1 upon x under root of x square minus 1. Same way, cosec inverse of x is minus 1 upon x under root of x square minus 1. Basically, you will have to remember them as formulas. But how did we get them? See, I will derive it for you. If y is sin inverse of x, तो sin y कितना हो गया आपका? x हो गया. Differentiating both sides. Sin y का derivative cos y और x का 1. No, please, that is wrong. Cos sin y को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो उसके बाद साथ क्या लगाना है? dy by dx भी लगाना है. तो sin y का डेरिवेटिव इज व्हाट? cos y dy by dx is equals to x का is what? 1. So dy by dx, how much do I get from here? 1 upon cos y. Now this cos y, I'll change it in terms of sin. तो 1 minus sin square theta क्या होता है? cos theta होता है. तो इस cos y को मैं क्या लिख दूंगी? 1 upon under root of 1 minus sin square y. और जब आपने y को sin inverse x लिया था तो sin y कितना था? x था. तो sin y की जगह पर मैं क्या रख दूंगी? x. तो ये कितना हो जाएगा? 1 upon root of 1 minus x square. तो ऐसे ही आप tan inverse और सबके formulas derive कर सकते हो. Same particular method. Please do them. They are not derivations. They are asked as questions itself. Derive the formula for tan inverse x. So all of you would do for tan inverse, sec inverse and cosec inverse. ठीक है? Now let's take up a question. अब अगर हमारे पास question है y is equals to sin inverse of 2x upon 1 plus x square. ये हमारा question है. This is 5.3 का question 9. तो फॉर्मूला लगा देते हैं कि मैम dy by dx अभी क्या बताया मैंने? 1 upon root of 1 minus x square. तो कितना हो जाएगा? 1 upon root of 1 minus 2x upon 1 plus x square का whole square into d by dx of this full quantity. This is wrong. Please do not do it by this method. It becomes very complicated and you do not get the correct particular answer. So what are you supposed to do? You're supposed to simplify the inverse trigonometric function first and then differentiate it. So if I make a substitution, अगर मैं x को यहाँ पर tan theta डाल देती हूँ, sin inverse of 2x upon 1 plus x square है. We have done inverse trigonometric function. ये किसका फॉर्मूला रिजेंबल कर रहा है? sin 2 थीटा का. तो x को क्या डालना पड़ेगा मुझे? tan
tan theta, तो I let x as tan theta, तो 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, ये किसका फॉर्मूला हो गया? sin 2 theta का, तो sin इनवर्स ऑफ sin 2 theta आ गया, sin इनवर्स ऑफ sin z मुझे क्या देता है? z, तो ये क्या बन गया? 2 theta बन गया। अब आप यहाँ से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो कि मैम dy by dx 2 और ऐसे, it is wrong, you have to first convert it to x वेरिएबल। तो थीटा क्या वैल्यू ले रहा है? आपने x को क्या डाला था? tan थीटा डाला था, तो थीटा क्या वैल्यू ले रहा है? tan इनवर्स ऑफ x ले रहा है, तो थीटा की जगह पर मैंने क्या डाल दिया? tan इनवर्स ऑफ x डाल दिया। तो अब you would differentiate both sides, differentiating both sides, now what do I get? y का dy by dx और tan इनवर्स x का 1 upon 1 plus x square, 2 is a constant, it goes out. Clear or not? Understood? I'll take up one more question to make the concept more clear. Question 12. I'm taking up what? Question 12. What's my question? Sin inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square. ये अब कौन सा फॉर्मूला रिजेंबल कर रहा है? 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. किसका फॉर्मूला होता है? cos 2 theta का फॉर्मूला होता है। So I'll have to put what? x as tan theta. तो x को अगर मैंने tan theta डाला तो 1 minus tan square upon 1 plus tan square, तो वो क्या बन गया मेरा? cos 2 theta बन गया। तो यहाँ पर क्या आया मेरे पास? sin इनवर्स ऑफ cos 2 theta आ गया आपके पास। अब you know sin इनवर्स ऑफ sin z मुझे क्या देता है? z देता है। तो इस cos को मुझे किसके टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा? sin की टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा। अब आप यहाँ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस नहीं कर सकते हो, बिकॉज sin इनवर्स और sin के बीच में कोई भी कोएफिशिएंट, कोई भी कांस्टेंट कुछ नहीं आना चाहिए। तो cos 2 थीटा को व्हाट डू आई राइट? sin ऑफ pi by 2 minus 2 theta, sin of 90 minus theta gives me what? cos theta. You all know this. तो sin of pi by 2 minus 2 theta लिख दिया, तो sin इनवर्स ऑफ sin z की फॉर्म हो गई, that gives me what? z. तो ये कितना हो गया? pi by 2 minus 2 theta. अब यहाँ पर आप डिफरेंशिएट ऐसे नहीं कर सकते हो, तो x को tan theta डाला था, तो थीटा कितना है? tan इनवर्स ऑफ x, तो थीटा की जगह पर मैं क्या रख दूंगी? tan इनवर्स ऑफ x रख दूंगी। नाउ यू विल डिफरेंशिएट इट बोथ साइड्स। अब x वेरिएबल में आ गया, y का डेरिवेटिव dy by dx। नाउ pi by 2 इज अ कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 minus 2 into tan inverse x का क्या हो जाएगा? 1 upon 1 plus x square. So what's the answer that I get? minus 2 upon 1 plus x square. Quickly one last question. Question 14. Sin inverse of 2x root of 1 minus x square. तो sin inverse of ये किसका फॉर्मूला रिजेंबल कर रहा है? 2 sin theta cos theta, which is what? sin 2 theta. तो यहाँ पर आप sin theta का भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो और cos theta का भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो. Any one of the two substitutions you can make over here. तो अगर मैंने x को sin theta रखा तो 2 sin theta under root of 1 minus sin square theta. Under root of 1 minus sin square theta मुझे क्या देता है? cos theta. तो ये कितना आ गया? 2 sin theta cos theta, which is what? sin 2 theta. तो sin inverse of sin z की फॉर्म आ गई, which gives me what? z. तो ये कितना हो गया? 2 theta. अब theta क्या है मेरा? sin inverse of x. तो 2 sin inverse of x आ गया. Now it has changed to x variable. So what will I do? Differentiating both sides. So dy by dx is 2 into 1 upon root of 1 minus x square. I hope with this inverse trigonometric functions is clear. So all the questions that we did in chapter 2 in inverse trigo can also be asked in differentiation. Just simplify की जगह find dy by dx आ सकता है. तो आपको हर क्वेश्चन को पहले क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा and then only you can differentiate it. So this was 5.3 के questions. Next we would be taking up exponential and logarithmic functions. But before I finish with my video, please do remember क्या करना है आपको? सबको याद है ना? Yes, you're supposed to like and subscribe my channel, and please do remember to like us on Facebook and Insta also. Please do that, all the students. Thank you.